2000. In this case, compliance report has been filed also. Last date of hearing, honorable court directed to produce the affidavit agreement between the party blocks. The agreement is not available in the record of the जनपद पंचायत में. Agreement is इनका file was respondent number 6 वाला file नहीं हुआ agreement. Kindly see last order. Rejoinder file करने के लिए दिया था. Thereafter, on 23rd. The last order is on 23, 23rd of September. Duration of the agreement. Duration. कितने दिन का agreement था आपका? But there is no duration in the agreement. In fact, neither in the policy, neither in the agreement there is any. ऐसा हो ही नहीं सकता. Agreement क्या indefinite करते हैं agreement क्या? तो आप स्टैम्प ड्यूटी की चोरी कर रहे हैं. अगर इंडेफिनिट एग्रीमेंट कर रहे हैं तो फिर आपको तो उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगी. वो सीओ जनपद स्टेट खुद जिम्मेदार. सीओ जनपद पंचायत ने लेटर लिखा सर को एग्रीमेंट कॉपी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर दोनों डिनाई कर रहे हैं, प्रिंसिपल साहब भी और कंसर्न स्वसहायता समूह. तो क्या क्या ड्यूरेशन होती है? चीफ एग्जीक्यूटिव आपको बुला लेते हैं ना, वो आगे ये मैडम क्या है? जी सीईओ है जनपद पंचायत. जी मैडम. जी सर, मैंने सर प्रकरण सर संज्ञान में आने के बाद मैंने बहुत कोशिश किया सर एग्रीमेंट ढूंढने की, सर आपकी पॉलिसी क्या है? कितने समय के लिए देते हैं? इसमें गवर्नमेंट के इसमें सर मेंशन नहीं है कि वो कितने साल की होगी. जब मेंशन नहीं है सर कि कितने साल की होगी. सर उसमें समूह एग्रीमेंट होने के बाद सर अगर कोई शिकायत पाई जाती है. वो तो हमें मालूम है. आपसे जो पूछ रहे हैं वो बताइए. फिर आप एग्रीमेंट कैसे कर लेते हैं 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे? ये एग्रीमेंट 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कैसे हो जाता है? किस प्रावधान में? जनपद पंचायत से नहीं होता सर, ये उसका स्कूल वालों से होता है. हाँ नहीं, अरे जिसका भी होता भाई, स्कूल भी तो इन्हीं के अंडर में है. जी जी. बोलते हैं कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स को इसकी जांच करने के लिए लिखिएगा कि ये एग्रीमेंट कैसे कर लेते हैं जब ड्यूरेशन नहीं है. टाइम पीरियड नहीं रहता. 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ये एग्रीमेंट P6 देखिए. श्री कौस्तुभ शंकर झा, प्लैनेट काउंसिल फॉर दी पिटिशनर. नहीं रोक लीजिए मैडम, नाम आ जाएगा. श्री शिव कुमार श्रीवास्तव, प्लैनेट गवर्नमेंट एडवोकेट विद. आपका शुभ नाम बताइए मैडम. राकेश सिंह फॉर. अरे आपने अभी पहले मैडम का नाम डाल दिया. प्रभा टेकाम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनपद पंचायत. कहाँ की है? उचेहरा डिस्ट्रिक्ट सतना. श्री राकेश सिंह, प्लैनेट काउंसिल फॉर R6. Respondent number 6. Next para. Ms. Tekam submits that no duration for agreement is prescribed. Full stop. There are no documents to show that what will be the duration of the agreement, and as and when any irregularity is found, then action is taken by the concerned party. Full stop. However, this submission is full of loopholes. Full stop. Agreement on record is on a stamp paper of ₹10. It is executed by the Secretary of School Management Committee and the Sarpanch of Gram Panchayat Kulgadi and the President/Secretary of the self-help group. Full stop. How an agreement having financial implications can be executed on a 10 rupee stamp paper is a issue which needs to be resolved, as authorities of the state cannot be permitted to defraud its own exchequer by paying insufficient stamp duty, in as much as per the Stamp Act, provisions of Stamp Act, no agreement is admissible on a stamp paper of non-judicial stamp paper of ₹10. Full stop. Matter be referred to the Inspector General of Stamps and Registration to take cognizance of this aspect and file its report that
whether such agreements are legal and whether the parties agreeing into such agreements are defrauding the state exchequer by putting insufficient by paying insufficient stamp duty. Full stop. Copy of this order be transmitted along with copy of Annexure P6 by the learned government advocate to the Inspector General of Stamp and Registration for his report. In the meanwhile, ये कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? विमेन एंड महिला बाल विकास, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट file his personal affidavit that what is the duration of agreement as per the policy and why that duration is not mentioned in the agreements executed by concerned authorities. Full stop. List this case for filing of personal affidavit of the Principal Secretary, Panchayat and Rural Development Department on 28 October 2022. There is an interim order that. IR to continue till next date. Great. Number 81. The detail department.